Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगी। जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो आपके सामने ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस डी ऑफ होता है, जैसे मेरे ग्रामर ठीक हो रहे हैं या नहीं, मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक हो रहा है या नहीं, मेरे प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहे हैं या नहीं। इस तरह अनेक क्वेश्चंस, इसका एक ही जवाब है, आप अपने पर कॉन्फिडेंट नहीं रखते। बोलचाल की जुबान में ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे आप बोलते हैं लॉन्ग टाइम नॉट सी यू, नो सी यू, गर्चे इस जुमले में वर्ब नहीं है, फिर भी वो यह सेंटेंस सही है। इसे हम इनफॉर्मल डायलॉग कहते हैं। आप बोलते समय पीछे मुड़कर मत देखें, आपके पीछे कुछ शैतान खड़े हैं, वो आपको टोकेंगे, वो कहेंगे अरे भाई यहाँ तो ग्रामर सही नहीं है, यहाँ एज लगना था, यहाँ आर लगना था। इससे इसी तरह आपको परेशान करेंगे। यह परेशान आत्मा से आपको दूर रहना है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो जीबी 100 की स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश पार्ट को समझना होगा। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आपके अंदर बोलने की कला आ जाएगी। चले अब मैं आप लोगों को बर्नर्ड शॉ की उस पार्ट पर ले जा रहा हूं जहां जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों से हिंदी में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट। बर्नर्ड शॉ टॉक्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. He says that if you visit a foreign country, a thought will always be there. You must speak correct English there. But keep in mind that no language could be spoken exactly and word to word correctly by each of its native speakers. Every British people also need help speaking correct English. The writer shared his views on a committee formed by BBC that wants to decide what is the correct English conversation. He says that members present in the committee know the English language as much as ordinary people do. He says that even the committee members needed to be accurately speaking English. They were not even satisfied announcing yes and no. Shaw says that how the members speak English is easily understandable. He concluded that this is the only most crucial feature of any language, that it made possible to convey our message to the listener. A language is successful when the listeners can easily understand it. The primary purpose of speaking any language is to convey the speaker's message to the listener. The author also says we can't consider any random English conversation or pronunciation as the only correct and constant. The pronunciation of any language varies with the regions of speaking. For example, the English we speak in India differs entirely from that in America. Several other factors are also responsible for the language pronunciation changes. We can't consider a single pronunciation correct and declare the rest incorrect or invalid. For example, we can't say that this person speaks correct English. Instead, this person speaks good and attractive English. The presentation of words matters the most. Shaw says that no two native speakers the same way their language, but the fact is that one should speak more carefully while addressing the public, as he speaks in his house or any informal places. हाँ, आपको यह बात याद रखना होगा कि अगर आप पब्लिक में लेक्चर दे रहे हैं तो आप होशियार रहने की कोशिश करें। आपसे गलत हो तो अगर आप घर में बात कर रहे हैं और आपके दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, यह अलग एक सर्कल है जहां आप इनफॉर्मल डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश
are two different forms of English language that differ in their use and linguistic characteristics. Spoken English is the informal and natural way of communicating in English, commonly used in everyday conversation. A relaxed tone, short phrases, and varying grammar patterns characterize it. The native speakers use spoken English. On the other hand, broken English is also known as pidgin or non-standard. English is a signified form that arises when English is used as a second language or as a communication between individuals with different native tone. Broken English often lacks proper grammar and syntax and may incorporate elements from the speaker's native language. Foreigners often speak broken English as they are new in the region, so they can't speak fluent and word-to-word correct English. For example, the English a foreigner speaks differs significantly from the English we speak locally. The pronunciation of words can be different. The way of speaking can be different. And even fluency shows a significant distinction in the language. Remember, here this part discusses informal speaking. हाँ, बोलचाल की जुबान में आप यह कोशिश करें कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला समझ रहा है कि नहीं। अगर सामने वाला आपकी बात समझ रहा है और आपको जवाब दे रहा है तो आप इनफॉर्मल स्पीच के मास्टर हैं। लेकिन याद रखना है कि फॉर्मल स्पीकिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, जिसके बारे में जेबी शॉ जो बताए हैं मैं उसे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब आप हिम्मत से बोलना शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन गलती को नज़रअंदाज करना होगा और अपने दोस्तों में बात करते रहना होगा। ओके, वी मीट अगेन टू नो मोर अबाउट फॉर्मल इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट।